So hello everyone. In this video, I'm going to be solving JEE Advanced 2026 physics paper. And as of now, I have not seen the paper at all. Uh, it is probably just about 20 minutes since the paper has been released, and uh, let us get into it. तो पेपर वन खोलते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है, and let us start solving. So practically, it's going to be a live solving video, but I did not go live because I might have to check a couple of formulas here and there. I don't want to give like inaccurate or confusing solutions. I want to be accurate. So I'm going to look up the formulas here and there. Right. So let us look at question number 1 of paper 1. So क्या given है that there is a large disk uh, and two smaller disks, each of radius r by 50, lying on its circumference like that, as shown. The smaller disks are initially in contact with each other with an angular separation delta theta between their centers. Okay. They are made to roll without slipping in opposite direction with constant angular velocities omega and omega, while the large disk is held stationary. The time at which the smaller disks are again in contact is right. So uh, we can just solve it in terms of the centers of the disk. The center of the disk जो है, they are currently at an angular separation of delta theta, and they are at a distance r plus r from the center of the larger disk, right? So once they start moving in opposite directions, the disks start rolling. The centers of the disks start moving, right, along that circle of radius r plus r. And by the time the disks again touch, their angular separation will again be delta theta. And so the total angle covered. So I can write it in terms of distance. So total distance covered by the centers of the disks. So the linear velocity of this disk will be uh, r omega, right? So r omega into tau will be the distance traveled by the center of the first disk, plus 2 r omega into tau will be the distance traveled by um, the center of the second disk. और total distance जो होना चाहिए वो कितना होना चाहिए कि 2 pi minus 4 delta theta into r plus r. So this should be the answer. This should give us the answer. So tau is equal to 2 pi minus 2 delta theta. R plus r में r is given to be r by 50. So 1 plus 1 by 50 will be 51 by 50 times r divided by 3 omega times r by 50. So we get tau is equal to 50 cancels, r cancels. So calculation we have to be a little careful about. Um, you know, so we just get 51 times. So options को थोड़ा देखा, options में कैसे answers है. Into 2 pi minus um, and what is delta theta? So delta theta also we have to find, right? So we can do that. Um, we can do that, and it is also given that sin delta theta is delta theta.
Let me do that again. So sine of delta theta is delta theta. So what we'll do is we'll consider this triangle, right? So in co-adjoining to one, right, and we'll draw this triangle over here. Now these sides are r plus r, both of them, right? And if I draw a perpendicular over here, um, this whole angle is delta theta. This whole angle is delta theta. तो हमें ये delta theta निकालना है basically, right? And let me just think about it. Okay, yes. So this is R. सबसे पहली चीज R है और इस बेसिकली ये जो दो पॉइंट्स हैं इन दोनों सेंटर C1 और C2, तो ये जो बीच की चीज है उसको हम एक स्ट्रेट लाइन मान रहे हैं. वी आर नॉट अज्यूमिंग इट टू बी a circular arc, right? And I don't think we even need to talk about that. I think this is accurate anyway. This is exact anyway, and this is R and R. So we just get that sine. So in this half triangle, in any of these half triangles, sine delta theta is R over R plus R, and it is equal to delta theta because we are given that theta is very small. So we can put it over here. So twice of R over R plus R by 3 omega. So we get 51 times 2 pi minus 2 times ऊपर 1/50 आएगा और नीचे 51/50 आएगा. So we get 2 pi. So again let me check that. ऊपर 1/50 आएगा और नीचे 51/50 आएगा. Yes. So this is um, so option B is the one with the matching. So let me just write it here. So question one is done. It is from rotation. Okay, let us move on to the second one. So this looks like from LC oscillations. So continue circuit consisting of a capacitor of capacitance C, coil of N turns per unit length, cross-sectional area S and length D, where D square is much greater than S. D square is much greater than S matlab it's a long solenoid. There is another coil of length D by 2, cross-sectional area S by 2 and 2 N turns per unit length completely inside the larger coil. The ends of the smaller coil are connected with each other by an insulated conducting wire. Insulated conducting wire. Okay, the self-inductance of the larger coil is L. Neglect edge effects and all the ohmic resistances. So there is no resistance in the circuit. The resonant frequency of the circuit is. Okay, so let me think. So what is the resonant frequency? How do you calculate that in such a situation? Because there is a coupling between the coils and then there is a capacitor, right?
So if there is a current, so we'll have to write the KVL equation, right? So if there is a charge over here and there is an instantaneous current in this, let me call this I, and let me say that the current here is some I1, or let me call it I1. Okay. So first let me find the self-inductance of the smaller coil, right? So self-inductance of a solenoid. तो कैसे लिखते हैं कि flux to a solenoid is equal to the magnetic field, which is mu naught um, n into I times n, right? This is the total number of length, total number of turns. So if n represents turns per unit length, then the total number of turns will be n times um, n times e, because e is the length, right? So in this situation, phi is equal to mu naught n square e times. So this is L, right? So larger coil के लिए inductance is L. Smaller coil के लिए inductance is, so this is the self inductance. Larger, smaller coil के लिए कितना होगा, because the number of turns is twice, and तो यहाँ पे एरिया भी होना चाहिए था. So I just made a mistake here. तो यहाँ पे एरिया भी होगा, which is S. So just going to change this. Right, I'm trying to make like good solutions. I'm going slow because I want to make fair solutions, like solutions which look good. Just don't want to solve in a messy way. Right? Self-inductance of the larger coil is L. Smaller coil के लिए number of turns is twice, but cross sectional area is half and length is also half, right? तो उसका भी self inductance L हो जाएगा, right? और mutual inductance के लिए phi through the smaller one because of the current in the larger one. अगर नहीं कहते हैं तो वो कितना होगा कि बड़े वाले का जो magnetic field है, which is this number times the area, the number of turns into d by 2. Number of turns per unit length is 2n for the smaller one, but um, the length is d by 2. So ये आ जाएगा. This is the number of turns times the magnetic field times the area, which is S by 2. तो ये जो पूरी चीज है ये L by 2 हो जाएगी. So mutual inductance is L by. So now we have found the basic things where we can solve this. तो मैं इस सर्किट के अंदर आता हूँ कॉपी करके. So it is always a very exciting process solving the advanced paper, just fresh out of ID Roadkey, just fresh out of uh, you know, just downloaded it just now, right? So we have to write KVL and KCL, right?
तो ओमिक रेजिस्टेंसेस नहीं है तो स्मॉलर कॉइल के लिए क्या होगा कि स्मॉलर कॉइल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है, क्योंकि even if there is a current there is no resistance there, so the potential difference across the smaller coil, the potential difference across the smaller coil is zero, and therefore the current in it must be constant, right? तो ये जो smaller coil है उसमें current cannot change, because if current changes then the potential difference induced across will violate uh, the Kirchhoff voltage law, right? I not equal to constant. Um, if I naught is constant, it produces a constant magnetic field, and then therefore there is no role of a mutual um, like no uh, because I naught is not changing, it will not induce any current in the larger coil, but the larger coil current might be changing, right? So let us write KVL for the larger circuit. So starting from this right bottom point, I get Q by C minus L di by dt is equal to 0. There is no induction happening in the larger coil because of the smaller coil. This should be clear because the smaller coil wala current is not changing with time. Right? So, uh, uh, right? And, so let me just check that. I just said in the smaller circuit, smaller coil wale circuit mein, current is not changing with time because the resistance is zero there. So the potential difference must be zero. No, I am wrong because that is actually wrong. So this is not correct. This is not correct because अगर coil का current change होगा होगा तो उसकी वजह से छोटे coil में induction हो रहा होगा, right? So let me just write it like this. Now, are we given any information about the way in the direction in which the coiling has taken place? No. Right? They are not given. Like pictorially, there might be some kind of representation, right? Because what can happen over here is if there is this current in the larger coil that I have shown, there may be there might be a magnetic field in this direction, right? And this magnetic field, um, so because there is a counterclockwise kind of wounding as it looks from here in the larger coil, uh, it will produce a magnetic field in the direction in which I have shown, right? And because the increase of this current will uh, what kind of induction will take place in the second coil? That is what I'm trying to see. So the second coil as I'm seeing, if I look from the top, there is a clockwise kind of wounding. There is a clockwise kind of winding. And because of this upwards magnetic field of the larger coil, um, uh, there will be an induced current in the clockwise direction. So let me take this. Let me just take this current in the opposite direction because this is the direction in which current is induced in the smaller coil because of the current. If current increases, if current in the larger coil increases with time, uh, this magnetic field arrow that I've shown will increase in magnitude, and because of that, um, a current in the direction that I've now shown, I naught, will be induced in the smaller coil.
तो ये कपलिंग की डायरेक्शन देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। कन्वर्सली अगर ये आई नॉट इंक्रीज करता है, अगर ये आई नॉट इंक्रीज करता है तो एक डाउनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, और डाउनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होने की वजह से ये करंट आई इंक्रीज होगा। सो अगर आई नॉट इंक्रीज होता है तो आई इंक्रीज होगा, और अगर आई इंक्रीज होता है तो भी आई नॉट इंक्रीज होगा। सो दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। बोथ करंट्स आर सपोर्टिंग ईच अदर, both currents are supporting each other. So uh, so I can write over here, why do I write a plus sign in front of m? This is I not, right? Why do I write a plus sign? Because uh, I just said कि अगर I not increase होता है तो एक काउंटर क्लॉकवाइज EMF जनरेट होगा लार्जर सर्किट में, and that means that I will increase as a consequence. तो जिस डायरेक्शन क्यू बाई सी है उस वैसे सोच सकते हैं कि क्यू बाई सी की डायरेक्शन में ही वो आएगा। जब करंट आई इंक्रीज होने से एक बैक ईएमएफ, सेल्फ इंडक्टेंस वाला जो ईएमएफ होता है वो बैक ईएमएफ। सो फॉर द स्मॉल वी कैन राइट कि राइटिंग द क्लॉकवाइज डायरेक्शन आई कैन राइट m di by dt माइनस l, इसको मैं L1 बोल देता हूँ, इसको L2 बोल देता हूँ। तो अब इट्स वेरी इजी बिकॉज़ वी नो द वैल्यूज, राइट? तो सेकंड इक्वेशन से मैं सॉल्व करना शुरू करता हूँ। तो आई गेट इंटीग्रेट कर दिया मैंने, राइट? तो मैं इनिशियल कंडीशंस कुछ मान सकता हूँ, तो इनिशियल कंडीशंस मान लेते हैं। Q is equal to Q, I is equal to I naught is equal to C. यहाँ से we get that I is equal to twice of I at any instant, right? Um, then if I use the first equation, uh, 1 by C, Q को मैं लिख सकता हूँ, if I just take a derivative over here, तो पूरे equation में derivative लेना better होगा. So I get 1 by C dq by dt is minus I, right? So minus I minus L1 is L plus M is L by 2, and I naught को भी मैं I by 2 डाल सकता हूँ. So this now becomes easy. I get a single second order differential equation in terms of current I, जो कि मेरे को resonant frequency दे देगी, right? So I get minus I by C minus L plus L by 4, so is equal to 3L by 4 into D into I by dt square. तो ये SHM वाली इक्वेशन है, ऑसिलेशन वाली इक्वेशन है, सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन. So d into I by dt square is minus 4 by 3LC into I. So this is my omega square. So this is omega square is 2 by root 3LC.
सी, तो आंसर सी होना चाहिए. So very intense, very beautiful question. Very beautiful question. Exam से kind of question है अगर आपने ऐसा solve नहीं किया है. So let me just go through the solution once again just to check कि self inductance कैसे लिखेंगे. Magnetic field into number of turns into area, right? Number of turns और number of turns per length into length से लिखेंगे. So mu naught n square ds into I. ये L गिवन है. ये वाला जो है बड़े वाले के लिए वो L गिवन है. छोटे वाले के लिए नंबर ऑफ टर्न्स पर लेंथ इज ट्वाइस, लेंथ इज हाफ एंड एरिया इज आल्सो हाफ. तो वो उसका L भी सेम हो जाएगा. चलो इंडक्टेंस निकालने के लिए मैंने क्या किया कि बड़े वाले के मैग्नेटिक फील्ड में छोटे वाले को रख दिया, उसके थ्रू फ्लक्स देख लिया. तो बड़े वाले का मैग्नेटिक फील्ड में नॉट ni है, छोटे वाले के थ्रू निकालेंगे तो 2n into d by 2 will be total number of turns into s by 2 is the area. तो l by 2 आ जाएगा. तो ये looking at how the winding looks. बड़ा वाला जो है वो ऊपर से देखने पे काउंटर क्लॉकवाइज दिखेगा, छोटा वाला ऊपर से देखने पे क्लॉकवाइज दिखेगा. तो ऐसे इमेजिन करो कि करंट आई इंक्रीज कर रहा है मैग्नीट्यूड में और डायरेक्शंस वही हैं जो मैंने दिखा रखी हैं, जो डायरेक्शंस हैं, राइट. तो अगर आई इंक्रीज कर रहा है विद टाइम तो ये जो एरो मैंने दिखाया है इस डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगा. बिकॉज ऑफ दिस इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड आई नॉट विल इंक्रीज. कन्वर्सली तो ये तो इसका मतलब हो गया कि अगर आई इंक्रीज होता है तो आई नॉट इंक्रीज होगा. दिस विल हेल्प अस साइन. तो ये वाला साइन था ये प्लस इसलिए होगा बिकॉज ये बड़े वाले सर्किट के लिए इक्वेशन है. तो ये छोटे वाले को अफेक्ट करेगा एक्चुअली. इस वाले जो प्लस साइन है कि आई नॉट के इंक्रीज होने से बैक ईएमएफ आएगा तो एक नेगेटिव साइन है. बट आई के इंक्रीज होने से आई नॉट इंक्रीज होगा तो एक पॉजिटिव साइन है. कन्वर्सली आई नॉट इंक्रीज होता है तो मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ इंक्रीज होगा, नीचे की तरफ इंक्रीज होगा तो आई शुड इंक्रीज. बेसिक रूल्स ऑफ लेंस लॉ से देखते हैं. So these are the differential equations. Then solving is not very tough. Initial conditions assume करने की both currents are zero, capacitor is charged. तो ये आ गया currents में relation. Let me just silently check the calculations once. That is correct. So let us move on. So question number 3 coming up. Rotation again. So उन्होंने show me for a set of questions आ रहे हैं. Rotation of the by subset of chapters होते हैं. Solid cylinder is rolling without slipping with center of mass speed this much on a horizontal surface with a vertical edge. At the moment when the cylinder loses contact with the surface due to rotation around the corner, speed of its center of mass is. तो ये भी solving वाला question है, मतलब ये आसान question है. तो take some time to solve it. सारे question थोड़े solving वाले हैं. कोई ऐसा नहीं कि एक क्वेश्चन ली और आंसर आ गया. तो प्रॉब्लम से पेपर में मैंने पेपर में लिखा ही नहीं होगा. तो नहीं और आगे जाएंगे तो ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जो जल्दी सॉल्व नहीं होगा. पेपर ऐसा नहीं हो सकता है. वेरी हार्ड टू बिलीव.
इस सिचुएशन में ऐसा होता है कि कहीं पे जाके नॉर्मल रिएक्शन जीरो हो जाता है। तो रोटेशन अराउंड द एज का क्या मतलब होता है कि अभी भी रोलिंग विदाउट स्लिपिंग नहीं चल रही है, रोलिंग विदाउट स्लिपिंग चल रही थी सरफेस पे, व्हेन इट रीचेस द कॉर्नर तो ये एक इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन बन जाता है और इस एज के अराउंड दिस पॉइंट ऑफ द स्फीयर इज एट रेस्ट और इसके अराउंड इसके अबाउट the cylinder starts rotating and at a particular instant when the angle made the vertical तो इस लाइन का जो एंगल है तो वर्टिकल जब वो थीटा हो जाता है तो इनिशियली वो एंगल जीरो था when the center of mass was right above vertically above this corner बट इस इंस्टेंट एंगल थीटा है तो यहाँ पे जाके कुछ कांटेक्ट लूज हो जाएगा और इसकी सेंटर ऑफ मास स्पीड कुछ उस इंस्टेंट पे इस डायरेक्शन में v होगी, राइट। पहले v नॉट थी अब v हो गई है तो ये वेलोसिटी का जो डिफरेंस है ये हम एनर्जी कंजर्वेशन से निकाल सकते हैं, राइट। ये एनर्जी कंजर्वेशन से निकाल सकते हैं और इस इंस्टेंट पे जो फोर्सेस होंगी अगर हम सिस्टम में मान लें कि नॉर्मल रिएक्शन जीरो हो चुका है तो दिस इज द इंस्टेंट ऑफ लॉस ऑफ कांटेक्ट, तो सिर्फ mg एक्ट कर रहा है और अगर ये सेंटर ऑफ रोटेशन है तो c is moving in a circular path around this point. So we can write the centripetal equation mv cos theta is mv square by r, equation के लिए और एनर्जी कंजर्वेशन से हम लिख सकते हैं दैट इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, तो रेफरेंस को मैं ये ले रहा हूँ u gravitational equal to 0, इसको ले रहा हूँ तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी was mgr, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी is mgr cos theta, राइट। तो हमें तो v निकालना है तो we have to eliminate theta, तो यहाँ से cos थीटा को हटा देते हैं, cos थीटा is v square by gr, so I solve it here, तो v naught में given है, v naught में given है under root gr by 3, so we get इस तरफ आ जाएगा mgr into 1 by 6 plus mgr equal to half v square plus mg mv square, तो cos थीटा को रिप्लेस कर दिया मैंने v square by gr, so I get 7 by 6 mgr is 3 by 2 mv square, so I get v is equal to 7 by 9 gr, so this is answer. So balancing, so we can just check my solution once again. So solid state that has no bearing on the problem at all. What doesn't matter. Oh, sorry, I missed the rotational term, energy conservation. That's what that is what I missed actually here. Luckily, the options is already not much. तो velocity में तो ये तो सिर्फ हाफ में v स्क्वायर का सिर्फ ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी के लिए सो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी के लिए
we'll have to because rolling without slipping है तो v is equal to r omega है तो I can write it like this. तो ये ट्रांसलेशनल वाली होगी और रोटेशनल वाली होगी हाफ इंटू हाफ m square omega square. So half into half omega square omega naught square and r omega is v. तो तो ये 1/4 हो जाता है और 1/4 हाफ लेके 3/2 3/4 हो जाता है राइट. So थोड़ा सा चेंज आएगा बस. So luckily it didn't match. अगर मैच कर जाता तो I would have moved on, right? तो यहाँ पे 3/4 आएगा 3/4 आएगा तो वी नॉट को डालेंगे तो 3/4 इंटू 1/4 हो जाएगा. So 1/4 हो जाएगा और यहाँ पे 3/4 है 3/4 की रहेगा. तो now clean it up again. So 5/4 3/4 plus 1 7/4. So V is 5/7 GR. The option is correct. तो पिछले वाले में C option is correct. So let us move on to question number 4. ये क्वेश्चन बहुत मुश्किल नहीं था, इसे बस केयरफुली सॉल्व करना था. This next one looks interesting, looks intense. रे ऑप्टिक्स है, कुछ ग्राफ है, देखते हैं क्या होगा. रोटेशन क्वेश्चन वाज एक्चुअली नॉट अ डिफिकल्ट क्वेश्चन बट सॉल्विंग की वजह से डिफिकल्ट. अभी तक की क्वेश्चंस में बहुत सॉल्विंग and I'm going slow because I want to make fair and final solutions. So double convex lens. Let us read the question. So having some refreshments on the way, which is very important for me because I'm not a 17-year-old anymore. ये क्वेश्चन इजी है कि एक डबल कन्वेक्स लेंस है, उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर ईच है, उसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सम लिक्विड में इमर्ज कर दिया, सम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो फोकल लेंथ क्या होगी? फोकल लेंथ क्या होगी? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास itself, over NL minus 1 by plus 20 minus 1 by minus 20, राइट. तो इसको मीटर में डाल सकते हैं, तो मीटर में कर लेते हैं इसको. डायोप्टर में पूछा हमसे, तो ये इसलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का तो कोई यूनिट नहीं होता, मतलब तो रेशियो होता है. बट अगर हम रेडियस ऑफ कर्वेचर को मीटर में डालेंगे तो फोकल लेंथ अपने आप मीटर, मतलब फोकल लेंथ भी मीटर में आएगी. सो so this is 5 and 5, so this becomes 10. So focal length
I put in meters. Makes sense. So F becomes राइट. तो अब इसका ग्राफ बनाना है. फोकल लेंथ और मतलब पावर लिख लीजिए. पावर इज तो, तो इसको आप शिफ्ट करके बहुत इजीली बना सकते हैं कि अभी जो माइनस साइन है उसको बाहर ले लें. तो इससे जस्ट माइनस 10. राइट. सो दिस इज द पावर. तो ये तो बहुत इजी ग्राफ है. मतलब एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है और उसको फिर शिफ्ट करना है. तो सिंपल ग्राफ बनाओ. तो एनएल जो है, एनएल का जो ग्राफ है उसमें सिर्फ 1 से ऊपर वाली वैल्यूज लेनी है. तो ये भी बहुत केयरफुली देखना है इस ग्राफ में कि जो एक्सेस है वो कैसे मार्क्ड है. तो एनएल की जो वैल्यूज है वो 1 से आगे की है. एनएल is obviously greater than 1 because it's a refractive index. But 0 से start करते हैं, right? Because it's a rectangle paper. But 15 over NL, okay, 15 over NL is just this. So this is E is equal to 15 over NL. But then I shifted downwards by 10 units. Downwards by 10 units. तो अब उसका इंटरसेक्शन होने लगेगा. ऐसा हो जाएगा. So this is P, this is NL. And P को 0 कर दिया तो NL की वैल्यू 1.5 आती है. So this is 1.5 and this is 0. So this is P is equal to 15 over. तो ऐसे सिंपली आप पहले एक सिंपल ग्राफ बना लो, उसको फिर शिफ्ट कर लो. तो पहले वाला जो ग्राफ है उसमें बस सारी वैल्यूज में 10 माइनस होता जा रहा है. तो ग्राफ एज अ होल नीचे शिफ्ट हो जाएगा और ये वैल्यू भी फिर माइनस 10 हो जाएगी. कि अगर NL बहुत बड़ा है तो द पावर अप्रोचेस वैल्यू -10 एंड अगर NL 1.5 के बराबर है तो पावर 0 है. कि मतलब सराउंडिंग मीडियम और ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है. और अगर NL 1.5 से छोटा है तो पावर पॉजिटिव है obviously because then the convex lens starts behaving like a concave lens. Conceptually the question is very good but not that difficult, right? So um, ये वाला हुआ A part वाला. So this is 1.5. The value at any time equal to 1 is 5. तो यहाँ पे अगर मैं 1 लेता हूँ तो this comes out to be 5. So A part is correct. So let us move on. So modern physics, say hello to modern physics. तो अभी तक जो क्वेश्चन थे वो सिंगल ऑप्शन थे, अब मल्टीपल ऑप्शंस हैं. So it's not going to be very pleasant, right? It's going to be more interesting, more tough. So you can read the question. So this chapter इसमें थोड़ा सा मेमोराइजेशन का रोल ज़्यादा होता है. एक एक करके देखेंगे. The electron undergoes a transition from nth orbit, emitting radiation corresponding to the Lyman series. लाइमन सीरीज जो होती है वो सबसे पहले वाली होती है. मतलब n equal to 1 में चला गया. ट्रांजिशन जो है लाइमन, इसका मतलब n से फर्स्ट में चला गया इलेक्ट्रॉन. ओके. मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कैसे लिखेंगे? तो हमें उसके लिए काइनेटिक एनर्जी पता होनी चाहिए, राइट? तो काइनेटिक एनर्जी
रेडियस और वेलोसिटी के टर्म्स में गिवन है और उसमें एच भी आ रहा है, तो थोड़ा सा स्मार्टली सॉल्व करना पड़ेगा, तो ऑप्शन पे ऑप्शन देखना पड़ेगा। अगर याद भी नहीं है तो बेसिक फैक्ट्स को यूज करना पड़ेगा कि जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो एच बाई टू पाई होता है, and it is equal to mvr, right? And z e square upon 4 pi epsilon naught r square is equal to mv square by r. तो हमें तो काइनेटिक एनर्जी लिखनी है, अगर हमें काइनेटिक एनर्जी लिखनी है इन टर्म्स ऑफ v एंड r और h भी आना चाहिए, तो हम v और r को यहाँ से ये कुछ भी यूज करेंगे यहाँ इंक्रीमेंटल वाली, राइट? और तो इसको ऐसे लिख लिया, तो कुछ समझ में आ रहा है मुझे। पर इसमें मास नहीं आ रहा। ओके, मास तो काइनेटिक एनर्जी में आएगा, तो काइनेटिक एनर्जी इज हाफ एम वी स्क्वायर, तो इसको मैंने ऐसे लिया हाफ इनटू एम वी आर इनटू वी बाय आर, सो दिस बिकम्स हाफ एन एच बाय 4 बाय एच वी बाय आर। तो ए पार्ट सही लग रहा है कि nth ऑर्बिटल में, ऑर्बिट में जो काइनेटिक एनर्जी है वो nh by 4 pi into vn by rn है। So kn is nh by 4 pi vn by rn. So A part is correct. Okay. Magnitude of change in de Broglie wavelength. K क्या है? K kinetic energy है। Magnitude of change in de Broglie wavelength क्या होती है? Is h over p. तो h over p लिखना है, इसलिए सिमिलर, तो 1 over kinetic energy जो है और r है e square over 4 epsilon naught, e square over 4 epsilon naught। तो कुछ ऐसा लग रहा है कि ये वाली इक्वेशन को भी यूज करना है, सेकंड वाली इक्वेशन को। हाइड्रोजन एटम तो Z1 है, तो Z को हटा देते हैं यहाँ से। तो यहाँ पर लिख देता हूँ कि Z1, तो ये जो सेकंड वाली इक्वेशन है इसको यूज करके देखो, d log e वेवलेंथ जो है वो mv के प्रोपोर्शनल है, तो हाउ ट्रांसफॉर्म इट, तो 1 बाय काइनेटिक एनर्जी आ रहा है। ओके, so let me write it down, it is equal to e square, ओके, और h नहीं आ रहा है, और पाई भी नहीं आ रहा है, तो फर्स्ट वाली इक्वेशन को भी यूज करना है, फर्स्ट वाली इक्वेशन को भी यूज करना है। k is equal to this भी यूज करना है, because I नहीं है, I हटाना है, तो if I just divide these two equations, what will I get? तो मेरे पास एक इक्वेशन ये है और मेरे पास एक इक्वेशन ये है, nh by 4 pi into v by r। तो इसको मैं उल्टा लिखूंगा और डिवाइड कर देता हूँ अगर, बट उससे फिर v कैंसिल हो जाएगा, is equal to h by 10v। तो बेसिकली वो r को हटाना है ना, तो I just multiply the two equations, I just multiply equations, so इसको मैं बोल दिया, इसको मैं 2 बोल दिया,
So I get E square K, 4 pi cancels, epsilon, which means R cancels. Uh, I get mv cube and h, ये आ जाएगा, नीचे वाला तो कैंसिल हो जाएगा, राइट. तो बस अब मेरे को एम वी करके जोड़ लूँ मैं, तो एम वी या वन बाई एम वी, वन बाई एम वी. What a beautiful question. What a different way of asking these things. Uh, uh, we are getting an extra v square, which is something that I'm concerned about. Uh, तो ये गलत, ये ऑप्शन गलत लग रहा है इसका मतलब, क्योंकि 1 by mv is, let me see, n h v square epsilon over e square k. वाओ, वाओ, k तो डिनोमिनेटर में आ गया, लेकिन बाकी सब कुछ उल्टा आ रहा है, और v स्क्वायर भी न्यूमरेटर में आ रहा है, और अब v स्क्वायर को हटाने का भी कोई तरीका नहीं है, राइट. तो h का भी स्क्वायर हो जाएगा, तो h by mv, तो एक्चुअली ये है, ये n square v square. So doesn't seem right. The option the option, let's go with this. The option is I don't see how else हम ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि डी स्क्वायर चाहिए मुझे, एप्सिलॉन नॉट चाहिए, तो वो सेकंड पे से आ सकता है, यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन लिखी हुई है, उसी से आ सकता है. और the kinetic energy equation I have written like this, and r हटाना है मुझे, r I don't want, so I just multiply the equations and r will cancel out both sides. So e square times k on epsilon naught is nh mv cube, correct, correct. और de Broglie भी लिखना है तो 1 by mv को लेफ्ट साइड पे है, और v square राइट साइड पे है, nh v square epsilon naught on e square k. ओके, तो भी ऑप्शन सही नहीं लग रहा है. I don't see how. या तो ऐसा भी हो सकता है कि सब चीजों का स्क्वायर आ रहा है, तो इस v स्क्वायर को फिर से k के टर्म्स में लिख लो, बट ई स्क्वायर भी नीचे आ रहा है, कुछ उल्टा उल्टा भी आ रहा है. ई स्क्वायर नीचे है और ऑप्शन में दे रखा है ई स्क्वायर ऊपर है, एप्सिलॉन नॉट ऊपर है, एप्सिलॉन नॉट ऑप्शन में नीचे दे रखा है, तो डजंट सीम राइट. Let me just check one last time. Yes, strong. Frequency of the C option, frequency of the radiation emitted can be expressed as, frequency जो होती है वो तो एनर्जी के corresponding होती है, और एनर्जी का जो फॉर्मूला है वो हमें, so we have an h there, we have a radius there, obviously ये वाली equation करनी है, first one is equation, equation. So starting with this, so total energy is RMB square plus minus B square over 4 pi epsilon.
twice हो जाता है, minus twice, sorry, minus of mv square हो जाता है और ये half mv square है, so this becomes minus half mv square. This is the whole energy. And h mu is equal to uh, uh, this is also equal to minus e square 1 8 by epsilon r. h mu जो है that is equal to this is the transition frequency, और ट्रांजिशन फ्रीक्वेंसी मतलब किसके करस्पॉन्डिंग है, ट्रांजिशन फ्रॉम n to 1. तो जो फोटोन की एनर्जी होगी वो इलेक्ट्रॉन की इनिशियल एनर्जी माइनस फाइनल एनर्जी के बराबर होगी. टोटल एनर्जी इनिशियल माइनस टोटल एनर्जी फाइनल. टोटल एनर्जी इनिशियल कितनी होगी, माइनस ई स्क्वायर 8 by 8 epsilon 1 over r 1 over minus 1 over r1. This is the answer. और h will come in the denominator. तो it's correct because there is a negative sign of the right. So this is correct. So C option is correct. Okay. Magnitude change in total energy of the electron can be expressed as magnitude change in total energy. Change in kinetic energy था ऊपर, अब change in total energy है, तो total energy kinetic energy exactly negative होती है यहाँ पे. Total energy kinetic energy half v square होती है, total energy भी half v square होती है, magnitude वही होता है. तो ये ऑप्शन करेक्ट नहीं हो सकता because ये ऑप्शन ऑलरेडी करेक्ट है, ये करेक्ट नहीं हो सकता. So is wrong. So A and C. Okay, let's move on. Very interesting question, very interesting solving procedure. Lot of fun, I must say. तो ये कुछ 2D मोशन जैसा लग रहा है, पोलिटाइल मोशन जैसा. देखते हैं. Particle is thrown with speed v from a point O at an angle of theta with the horizontal plane such that it passes through point P at a height of 1 horizontal distance. Okay. तो ये तो इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी है. इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी निकाल दो और देन come to formula equation. All the options ऐसे लग रहे हैं. Right. So equation of trajectory is y is equal to तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है 5,1. इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी का जो ओरिजिन होता है वो हमेशा पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पे होता है. तो u की जगह हमें v डालना है, तो y की जगह 1 डाल दिया. 5 tan theta. X is 5. ये ऑप्शन में गिवन है, ये ऑप्शन में गिवन है कि tan theta, तो theta is 45. थीटा इज 45 है, तो v की वैल्यू निकालनी है. तो 1 is equal to
tan theta 1 हो गया। इस तरह का क्वेश्चन तो एग्जाम में बिल्कुल नहीं होना चाहिए। So this is a scoring question, this is कठिन होना चाहिए। So ये आ रहा है 25g over 8 y is equal चेक कर रहा हूँ फिर से y is equal to x tan theta minus gx square over 2u square cos square theta y को what डाला x को 5 डाला should satisfy this point should satisfy this equation not arbitrary और मतलब ये इक्वेशन थीटा और v के टर्म्स में है तो इसमें अगर आप कोई थीटा की वैल्यू डालोगे तो v की एक फिक्स्ड वैल्यू आ जाएगी। अगर आप ऑल्टरनेटली अगर v की कुछ वैल्यू डालोगे तो थीटा की दो वैल्यूज आ सकती है बिकॉज क्वाड्रेटिक है tan थीटा में। तो tan थीटा 1 डाल दिया तो वी गेट ओके इसका पहला ऑप्शन कह रहा था मतलब वही है कि एग्जाम में हमें लगता है इतना इजी क्वेश्चन है ये ऑप्शन तो करेक्ट होना ही चाहिए तो ये ऑप्शन गलत रखा है उन्होंने कि मतलब एकदम से घबराहट भी हो सकती है किसी को कि अरे मैंने गलत सॉल्व करा है मेरे को ये भी नहीं आता प्रोजेक्टाइल भी नहीं आता ऐसा भी हो सकता है। सो इट ऑल्सो शोज how the examiner thinks. If theta is equal to 45, particle reaches its maximum height before it reaches P. Very interesting question. तो इसमें बस रेंज निकाल लेंगे और अगर रेंज 10 से ज्यादा आई राइट क्योंकि मैक्सिमम हाइट तक जो x डिस्प्लेसमेंट होता है वो रेंज का आधा होता है और x डिस्प्लेसमेंट p तक 5 है तो अगर रेंज 10 से ज्यादा आई तो इसका मतलब p पॉइंट हैज अकर्ड बिफोर द मैक्सिमम हाइट राइट। तो v स्क्वायर ये है और थीटा 45 है तो रेंज कितनी होगी sin 2 थीटा ओवर g 25g over 8 तो v square sin 2 theta over g theta is 45 तो ये तो एक इंटरेस्टिंग कॉन्ट्रडिक्शन आ रहा है तो ऐसा क्यों आ रहा है have I put the wrong formula v square sin 2 theta over g sin 2 theta would be sin 90 which is 1 तो 25 by 8 आएगा तो ये बहुत कम आ रहा है so where is the error क्या है so इसका लिस्ट मुझे रखिए y is equal to 1 x tan theta minus tan square theta is 1 तो g की तरह ही रहना है so I get us 25g over 8 25g over 8 ठीक है range is v square sin 2 theta over g okay hmm. So I'm going through those one of those exam moments calculation गलत है कुछ contradiction है it doesn't make any sense v square sin 2 theta over g comes out to be 25 by 8 which cannot be correct क्योंकि 25 by 8 तो 5 से भी कम होगा तो then तो 3 पास में जाएगा okay let me come back to it let me come back to it तो इसी वाली को सॉल्व करता हूँ सी सॉल्व करता हूँ तो यहाँ पे 3 टाइम्स 30
particle reaches maximum height after reaching the 30 again we have to find v square. So 1 is equal to tan theta is 1 by root 3. Uh, let me do this again. कुछ गलत भी हो सकता है मतलब ऐसा हो सकता है कि 45 के लिए ये पाथ पॉसिबल ही नहीं है मतलब ऐसा भी हो सकता है ना 45 के लिए 1 और 5 का जो कॉम्बिनेशन है ये पॉसिबल नहीं है ऐसा भी हो सकता है so let us just check कोई ट्राइटेक्टरी से तो कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है मतलब v की एक वैलिड वैल्यू आ रही है अगर v स्क्वायर नेगेटिव आता तो देन कॉन्ट्रडिक्शन होता बट v स्क्वायर पॉजिटिव आ रहा है so let me just check again square tan square theta to u square cos square theta होता है that is a mistake at so mistake error um, brutal error fortunate this case पूरा contradiction में गलत so calculation error so यहाँ से आएगा 25g over v square is 4 this implies v square is 25g by 4 so ये करेक्ट है तो ये ऑप्शन करेक्ट है और रेंज निकालना है तो इसका वैल्यू 25 by 4 is like 6.25 तो इसका मतलब 10 से कम है रेंज that means that it has already passed its highest point तो maximum it already कम हो गया है so range is less than 10 this implies B is correct so A is going to over here B is also correct one more option C जहाँ पे angle 30 degrees है okay so u square cos square theta cos square theta so cos square theta will be 3 by 4 so ऐसे लिख लेते हैं root 3 by 2 cos 30 degrees making the most silliest errors over here um, so 50g याद है और इस केस में रेंज क्या रहेगा sin 2 theta sin 60 degrees g so 50g into g into root 3 by 2 so g cancels cross multiplying नीचे so we get 10 minus 2 root 3 और ऊपर 3 भी आ जाएगा तो 75 हो जाएगा so this is approximately 75 over 2 root 3 कितना होगा 1.75 कर लेते हैं उसको so that becomes 3.5 so it is 6.5 so greater than 10 so 30 degrees में range is greater than 10 so particle reaches maximum height after reaching P that is correct C option is correct और लास्ट वाला तो इजी है उसमें शायद कुछ मेरे को लग रहा है कि नॉन रियल सोल्यूशन आएगा ऐसा लग रहा है
My various. So yes, correct. The option is that theta is equal to tan inverse 1 by 5. So y was 1 5 into 1 by 5 minus gx square over 2 b square cos square theta. Cos square triangle बना लेंगे. So this is 1, this is 5, this is root 24, root 26. I'm sorry. So cos square theta will be 5 by root 25 by 26. Yes. तो ये 1 और 1 नहीं कैंसिल हो जाएगा. फिर v को बहुत ज्यादा लार्ज करना पड़ेगा. मतलब this 1 and 1 is getting cancelled on both sides. तो अगर मतलब एंगल इतना छोटा है tan inverse 1 by 5 ही है. तो अगर यहाँ से आपको इस पॉइंट को ज्वाइन कर दिया हमने एक स्ट्रेट लाइन से, तो ये एंगल tan inverse 1 by 5 हो जाएगा. तो उस केस में इनफाइनाइट वेलोसिटी देगी, उसी केस में इस पॉइंट से पास करेगा. So D option is not correct. So V is equal to infinite and therefore A, B and C all three are correct, but D is wrong. What was solving mode? But another fun question, like not very fun, but as far as projectile motion goes, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है. Moving on, thermodynamics. Physics का पेपर टफ लग रहा है. Paper 1 at least. It's looking quite solving heavy. मतलब 2-3 क्वेश्चन थोड़े से इजी भी थे, मतलब 6 में से शायद 3 क्वेश्चन शुरू के काफी टफ थे. मॉडर्न फिजिक्स वाला टफ था, रोटेशन के दोनों टफ थे, और एलसी ऑसिलेशन वाला तो बहुत ही टफ था. मतलब आई थिंक काफी लोग तो देख के छोड़ देंगे. तो पीवी डायग्राम के बारे में कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं. पीवी डायग्राम है, ए से बी आइसोथर्मल है, फिर आइसोकोरिक है, फिर एडियाबैटिक है. If cycle has heat input Qn and output Q out, efficiency of the cycle is Qn minus Q out over Qn. Qn minus Q out जो होगा नेटवर्क होगा, तो efficiency निकालनी है. तो ओरली करने की कोशिश करते हैं. V2 by V1 is 8. Okay. Heat released in the process BC is smaller than heat absorbed in the process AB. Okay. मोनोएटॉमिक है. V2 by V1 सारे ऑप्शंस में 8 ही है. अब बी ऑप्शन में क्या गिवन है कि for a given value of V2 by V1, eta does not depend on the temperature of the isothermal process. Okay, what an interesting question. तो eta जो होगा वो तो मतलब V2 by V1 कांस्टेंट है. V2 by V1 8 के लिए पहले कुछ सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा इजी लगने लगेगा, समझ में आ जाएगा क्या चल रहा है. ओके, so let me call it V. तो ऐसे देता हूँ मैं कि
Um, so A is, let me call that B, V. तो B क्या हो जाएगा? वॉल्यूम 8 टाइम्स हो गया है, temperature 8 times comes volume. So this is the state and temperature is the same. Right? Temperature भी लिख लेते हैं. Temperature भी लिख लेते हैं. And C क्या है? C is like अगर A से C सोचें तो PV raised to power gamma. So P into P raised to power gamma, which is monoatomic. For monoatomic के लिए कितना होता है? 5/3 is PC and volume is 8V 5/3. So this means PC is 8 का power 1/3 is 2 की power 5 is 32. So it is P/32. Okay. P/32 है, वॉल्यूम 8V है, तो टेम्परेचर 4 मिलेगा. So ये सब डेटा हमने निकाल लिया, तो हम वर्क वगैरह लिख सकते हैं. तो कितना हुआ? तो A से B में आइसोथर्मल है, तो आइसोथर्मल में डेल्टा यू 0 होता है, वर्क पॉजिटिव है तो हीट भी पॉजिटिव होगा. और आइसोकोरिक में वर्क 0 है, वर्क 0 है और डेल्टा यू नेगेटिव है, तो डेल्टा क्यू भी नेगेटिव होगा. तो BC इज द प्रोसेस जिसमें हीट आउट हो रहा है, क्यू आउट हो रहा है. और C टू A में भी शायद क्यू आउट होगा, ऑफ कोर्स बिकॉज एडियाबैटिक है, and उसमें 0 होगा इनफैक्ट बिकॉज एडियाबैटिक है. ओके, तो QE is the heat in which is equal to work in terms of in the case of isothermal. तो NRT P naught V naught कर सकते हैं, जैसे PA into log final volume over initial volume. So PV log, so this Q in Q out is minus of Q. तो Q out एक पॉजिटिव चीज है, तो माइनस ऑफ Q BC. तो आइसोकोरिक में जो हीट होती है वो NCV डेल्टा T होती है. तो और NC डेल्टा T को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, CV by R into PV minus PC की NCV डेल्टा T को मैं N into डेल्टा T को मैं लिख सकता हूँ 1/R into डेल्टा ऑफ PV. ये यहाँ लिख लेते हैं. This is easy. CV is 3/2. Pressure और volume का product is PV in case of E. In the case of C, it is P/4. So 3/4 into 3/2, 9/8. Right. Correct. So efficiency so ये EV log 2 है, it is 0.7 P. तो हीट निकालने के लिए बोला भी नहीं है वैसे,
ईटा निकालना ही नहीं है। अ, तो actually ईटा निकालना नहीं था, तो you have to be focused on the options also, very important. So the question वैसे तो इजी भी है बहुत, लेकिन टफ लग सकता है बिकॉज ईटा निकालना है तो बहुत सारी कैलकुलेशन, बट ईटा निकालना ही नहीं है, आपने ये सब चीजें निकाल ली, ए बी सी जो स्टेट वेरिएबल्स थे, तो then you can proceed with the options. So because 8 है, heat release process BC is smaller than heat absorption process AB. तो ये तो सिर्फ हीट इसके लिए निकालनी पड़ेगी, तो heat release in the process BC is 9 by 8 PV, but heat absorbed is 0.7 PV. तो तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए साइक्लिक प्रोसेस में, क्यू इन शुड बी ग्रेटर देन क्यू आउट, बिकॉज डेल्टा यू जीरो है फॉर साइक्लिक प्रोसेस, तो वो भी पॉजिटिव होगा। तो हीट इनपुट must be positive, must be greater than heat output, और हीट इनपुट ए बी में होगा, एन आर टी into log of this, we do by log of 8 होगा, sorry, okay, sorry, so that's 2.1, making these small errors, so 2.1 है और 9.8 है, तो छोटा है, तो heat release is smaller, so A is correct, A is correct. If V2 by V1 is 8, then the temperature of the gas at A is 4 times. Temperature of the gas at T is 4 times the temperature of the gas at C. Pressure of the gas at A is 4 times the pressure of gas at B. No, it is 8 times. So D is wrong. For a given value of V2 by V1, eta does not depend on the temperature of the isothermal process. तो isothermal process हमने एकदम शुरुआत से देखा, तो हम ईटा निकालना चाह रहे हैं, तो हमें क्यू ए भी निकालना पड़ेगा, तो हमने उसके लिए लिखा एन आर टी इंटू लॉग ऑफ वी टू बाई वी वन, तो वी टू बाई वी वन हमें गिवन है, ठीक है, अगर हमें वी टू बाई वी वन गिवन है, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इज द मेन क्वेश्चन, बाकी सारे ऑप्शंस तो ही गए, वो तो इतना ज्यादा टफ नहीं थे, बट बी ऑप्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि अगर वी टू बाई वी वन गिवन है, तो बी ऑप्शन को लिखते हैं, तो ये निकालना है, तो ये होगा नो, क्यों क्या है, तो सपोज आइसोथर्मल प्रोसेस का टेम्परेचर T है, तो this will become फिर से स्टेट वेरिएबल्स को लिख लेता हूँ, ठीक है, फिर से स्टेट वेरिएबल्स को लिख लेता हूँ, तो एक का टेम्परेचर वेरिएबल T और V और T, ठीक है, अब मैं T पे जाता हूँ, तो आई एम गॉन थ्रू एन आइसोथर्मल प्रोसेस, तो वॉल्यूम कुछ लेट्स से मुझे गिवन है, लेट्स से मुझे गिवन है V1 is alpha, so I get V by alpha, and B to C जाता हूँ, so again using this relation, using this relation from C
C के लिए I can write E A B power by 3 is P C alpha V A power by 3. तो P C आ गया यहाँ से, P C is alpha V power minus 5 by 3. Entropy and volume is alpha and temperature will be दोनों का multiplication P by alpha की power 1 और alpha की power minus 5 by 3. Alpha की power minus 2 by 3. Okay. ये मेरे को क्यों लिखना पड़ रहा है? Because I have to write the heat of the process B to C. Right? तो B to C जा रहा हूँ मैं. Isochloric process है, तो the heat is NCV delta T. And what is NCV delta T? Very interesting. So, NCV delta T, TC minus TB. ये नेगेटिव आएगा obviously, QBC will be a negative quantity. But इसमें T cancel हो सकता है. So I get this. ये question is correct. कि अगर मेरे टेम्परेचर कैंसिल हो जाता है, टेम्परेचर कैंसिल हो जाता है, जो आइसोथर्मल प्रोसेस का टेम्परेचर था, मैंने उसको टी मान लिया और टी वो कैंसिल हो गया. उस टी के टर्म्स में मैंने ईटा निकालने की कोशिश की, मैंने कोशिश करी कि टी आए एक्सप्रेशन में, बट टी अपने आप कैंसिल हो गया. In fact, V2 by V1 is the quantity that it depends on, which is a very beautiful fact that they have demonstrated through this question. कि अगर ऐसा एक आइसोथर्मल, एक आइसोकोरिक और एक एडियाबैटिक का एक साइक्लिक प्रोसेस है, then if these two volumes का रेशियो हमें गिवन है, उस वॉल्यूम के रेशियो पे बस अल्फा पे efficiency of the cycle will depend and not depend on any of the other state variables. कि आप उस पूरे प्रोसेस को ऊपर भी शिफ्ट कर सकते हो, प्रेशर को बढ़ा सकते हो पूरे प्रोसेस में, बट दैट डज नॉट मैटर. ओनली एंड वॉल्यूम को भी चेंज कर सकते हो, बस वॉल्यूम दोनों तरफ जो वॉल्यूम है उसका रेशियो सेम होना चाहिए. इंटरेस्टिंग. सो आई थिंक ABC are correct. So ABC is the answer. Okay. So another beautiful question, another new kind of question. हमेशा JEE Advanced नए questions हमें देता रहता है every year. Such a beautiful thing. JEE Advanced really is an exam of high repute. Electromagnetic waves का question है. And I think after this question I'll take a break. I'll have something to eat. It's already been quite a while solving this paper. मेरे ख्याल से आता है paper पूरा available. I have not seen any of the questions. I am seeing every question for the first time when I'm solving it. So yeah, that is why it is more fun for me also. The electric field associated with electromagnetic wave is given by this. Okay. All quantities are in SI units. तो ये question simple है. ऑप्शंस देख लेते हैं. वेव स्पीड पूछी है, वेव की डायरेक्शन पूछी है, वेव स्पीड नहीं पूछी, सॉरी, वेव की डायरेक्शन पूछी है, वेव वेक्टर पूछा है, ओमेगा पूछा है, राइट, मैग्नेटिक फील्ड पूछा है. तो ये वैक्यूम में है,
आई क्या है, तो ये ब्रैकेट ला देते हैं। So it is so k, तो जनरल इक्वेशन ये होती है, राइट, राइट। तो k जो होता है वो एक वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड गिव्स यू 2 पाई बाय लैम्डा, एंड r is simply the position vector of a particular point at which the electric field is given by this, right, uh, into some, ठीक है। एंड तो अगर इसको इस फॉर्म में ब्रेकअप करें तो k क्या होना चाहिए, सो विल गेट, सो सो यहाँ से आ रहा है k वेक्टर इज माइनस, तो ये जनरल इक्वेशन में नेगेटिव होता है, नेगेटिव होता है कि अगर आप उस नेगेटिव साइन को इंक्लूड करते हो तो जो k वेक्टर है वो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन डायरेक्टली दे देता है, राइट। तो k क्योंकि यहाँ नेगेटिव साइन नहीं है तो हम k में एक नेगेटिव साइन ले लेंगे, और ऑब्वियसली फिर हम पूरे पूरे जो आर्ग्यूमेंट है उसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई तो कर ही सकते हैं बाय एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग बाय टू द फेस, राइट। तो मतलब कहने का मतलब कि ओमेगा के आगे नेगेटिव है या k के आगे नेगेटिव है, मतलब दोनों के आगे ऑपोजिट साइन है, ऐसा होना चाहिए इन द स्टैंडर्ड फॉर्म की इक्वेशन। सो k इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ, so ये आ गया, right, so let me just put a box around it। तो सब कुछ SI यूनिट्स में है, तो k का जो यूनिट होगा वो मीटर इनवर्स होगा और k का जो मैग्नीट्यूड है वो 5 होगा, राइट। तो डायरेक्शन इज डेफिनेटली करेक्ट, so A is correct, D is wrong। वैल्यू ऑफ ओमेगा पूछा हुआ है, वैल्यू ऑफ ओमेगा विल बी k is equal to omega by k, this implies omega is kc, so k is 5, so C is correct। एंड मैग्नेटिक फील्ड जो होगा, मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड तो सेम है और जो साइन के अंदर एलिमेंट है वो भी सेम होना चाहिए, मैग्नीट्यूड मतलब only not by C obviously, and the direction of propagation को हम ऐसे निकाल सकते हैं कि जो E, B एंड
the direction of propagation form a unit unit vector cycle with respect to cross product, just like ijk form that uh, so ep and k form cycle. तो बी आएगा k क्रॉस ई से। तो j cross i will give us k, तो एक नेगेटिव चाहिए तो माइनस k हो गया, uh, और k cross i will give us j, बट एक नेगेटिव साइन भी हो गया साथ। तो अगेन रिपीटिंग, j cross i gives us minus k, बट एक नेगेटिव साइन है तो प्लस k हो जाएगा। So we get this k cross i से j आना चाहिए, but so this is the answer, 3k minus 4j. um, so this is wrong. So again checking कि e cross b से मुझे k मिलता है, e cap cross b cap से मुझे k मिलता है, तो k क्रॉस e k cap क्रॉस e cap से मेरे को p मिलेगा। तो and k is not this k actually, तो ये थोड़ा confusion यहाँ पे create हो सकता है, so let me call it capital K. So let me draw a box again. तो इसको मैं कैपिटल K लिख रहा हूँ, राइट। तो ये ऑप्शन में मुझे के जो मेरा है नेगेटिव में है, दिस इज रिलेशन ऑफ प्रोपगेशन, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म होती है उसमें के डॉट आर और ओमेगा टी के बीच में नेगेटिव साइन होता है, मतलब दोनों में से एक का साइन नेगेटिव और एक का पॉजिटिव है, अगर दैट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म। उस फॉर्म में लिखने के बाद जो आपका के दिखाई देता है वो आपका डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन होता है। तो यहाँ पे डजंट मैटर कि के वाले टर्म के आगे नेगेटिव साइन है या ओमेगा वाले टर्म के आगे नेगेटिव साइन है, बिकॉज हम पूरे आर्ग्यूमेंट का जो नेगेटिव साइन है वो उसमें पाई ऐड या सब्ट्रैक्ट करके रिमूव कर सकते हैं, बिकॉज इट्स अ साइन फंक्शन। साइन ऑफ पाई प्लस थीटा इज साइन थीटा इज नेगेटिव ऑफ साइन थीटा, एंड साइन ऑफ माइनस थीटा इज आल्सो नेगेटिव ऑफ साइन थीटा। तो पाई ऐड सब्ट्रैक्ट करके आर्ग्यूमेंट में हम नेगेटिव साइन को रिमूव कर सकते हैं। सो दिस नेगेटिव साइन के साथ इज द प्रोपगेशन वेक्टर, इज द वेव वेक्टर, और इसका मैग्नीट्यूड 5 है। तो ये ऑप्शन गलत है, ये ऑप्शन करेक्ट है। ओमेगा का वैल्यू करेक्ट है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन का वैल्यू भी गलत है। तो कि के की वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड आई कैप में प्रोपगेट कर रहा है, ऑसिलेशन की डायरेक्शन वो आई कैप में है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड फेज भी होते हैं, इन फेज भी होते हैं। तो जिस इंस्टेंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड आई कैप वाली डायरेक्शन में है, उस इंस्टेंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में होगा जो मैंने यहाँ निकाली है, फेज में होते हैं, राइट। तो मतलब अगर साइन साइन फंक्शन के अंदर का जो आर्ग्यूमेंट है वो एग्जैक्टली सेम है, तो फिर बी की जो
प्रोपेगे बी के ऑसिलेशन के मतलब बी के जो पूरे एक्सप्रेशन के आगे जो यूनिट वेक्टर आएगा वो इस तरीके से निकलेगा और वो ये आएगा. Just checking the calculation once again. K is 3J plus 4K. Electric field is I cap. तो J क्रॉस I से हमें माइनस के मिलता है बट बाहर भी एक माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस 3 के हो जाएगा. K क्रॉस I से हमें J मिलता है बट नेगेटिव साइन भी है. तो माइनस 4J प्लस 3 एग्जैक्टली वो एग्जैक्टली उल्टा है. तो A क्रॉस C करेक्ट है. तो I'll pause my video over here and take a break of 10-15 minutes, have my dinner and come back. So let us resume. Um, moving on to question number 9. मेरे को कितनी बताइए कितने क्वेश्चंस हैं. The section 3 has 4 questions numerical value and 2 decimal places तक करना है. ठीक है, तो liquids का क्वेश्चन आ रहा है. Um, let's look at this question. तो आराम आराम से सॉल्व करेंगे, बिल्कुल स्ट्रेस फ्री क्वेश्चन है. मैं एग्जाम थोड़ी दे रहा हूँ. Tank contains 2 immiscible liquids. Okay. हेवियर लिक्विड को नीचे भर दिया L/2 डिस्टेंस तक, ऊपर वाले को थोड़ा ज्यादा भर दिया. मतलब ऊपर वाला तो दिखाया ही नहीं, उसका टॉप नहीं दिखाया. थिन रॉड ऑफ डेंसिटी रो एंड लेंथ इज फुल्ली इन्वर्स. buoyancy का क्वेश्चन लग रहा है. hinged at the bottom so that it can oscillate freely. Slightly disturbed from equilibrium position. Time period of small oscillation is. Wow, what a question, what a beautiful question. तो टॉर्क देखेंगे, रिस्टोरिंग टॉर्क देखेंगे. So let me just draw here. So ये हमारी रॉड है. और this is the hinge point. ठीक है. And this is where the first liquid ends. And so let me say that it has been disturbed by theta. So theta से मैंने deviate कर दिया है उसको. तो this is L by 2. So this distance is L by 2. And this becomes L by 2 secant theta. This inclined length. तो बाकी की जो लेंथ बची होगी वो L minus तो L by 2 secant theta will be larger than L by 2. तो ये vertical height तो L by 2 से ये भी. What a beautiful question this is going to be. So mg will obviously act at the center, but buoyant forces will act at the center of the immersed portion, right? तो इस वाले पार्ट पे buoyancy रहेगी ऐसे यहाँ पे at the center of the immersed portion और यहाँ पे buoyancy रहेगी, buoyancy की force लगेगी at the center here. So let me call it O. Let me call this point O. थोड़ा बड़ा भी कर देता हूँ इसको मैं.
सो ये मेरा पॉइंट ओ है, ये मेरा पॉइंट P1 है, ये मेरा पॉइंट P2 है और ये मेरा पॉइंट P3 है। ठीक है, या P2 P3 की बजाय इसको मैं S बोल रहा हूँ, स्टार्ट पे इसको मैं P2 बोल रहा हूँ। ठीक है, तो मेरे को टॉक लिखना है और mg का डॉट तो मैं पता है, वो तो पता ही है। तो ये फोर्सेस mg का डॉट तो बहुत इजी होगा लिखना। B1 and B2, तो पहले B1 B2 का मैग्नीट्यूड लिख लेते हैं। B1 will be density of the liquid in which it is immersed into the volume of the rod which is immersed in that liquid. So it will be the volume of the rod which is immersed, the area of cross section. तो रॉड की डेंसिटी रो है और लेंथ एल है। ओके, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए ले लेते हैं, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को ए लेते हैं। तो कितना हो जाएगा, L/2। I think it makes sense. Then distances लिखने पड़ेंगे, तो अब मुझे OP1 नहीं चाहिए, मुझे एक्चुअली उसका डिस्टेंस चाहिए, तो वो मैं साइन थीटा मल्टीप्लाई कर दूंगा। OP1 में मैं साइन थीटा मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे P1 का डिस्टेंस मिल जाएगा ये वर्टिकल डॉटेड लाइन से, क्योंकि मेरे को टॉर्क में वही डिस्टेंस चाहिए। then my OP will be correct. तो इसलिए मैं एक्चुअली रिस्टोरिंग टॉर्क निकालना है। So टॉर्क जीरो नहीं होगा, अभी तो ऑसिलेशन होगा। So we get this. तो B1 में O, A, G और L ये पूरे कैंसिल हो जाएगा।
और इनफैक्ट एल स्क्वायर हुआ जो पूरे में कैंसिल हो जाएगा, तो आई एम नॉट राइटिंग दैट। कैंसिल नहीं हुआ मतलब कॉमन ले लिया जाएगा। तो p1 into op1 is 3 secant theta, 3 by 4 b2 into op2 और sin थीटा भी आएगा, b2 into op2, तो 2 minus secant थीटा दिख रहा है मुझे, तो आई विल गेट 2 कैंसिल भी हो जाएगा, 2 minus secant थीटा दिख रहा है और माइनस sin थीटा। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि secant square theta कैंसिल तो नहीं हुआ, बट उसको हम 1 ले लेंगे because theta is very small, so cos theta is 1. So let's check once again. तो हमने इमर्स किया है, हाइट ऑफ दिस बॉटम लिक्विड इज L/2, तो ये L/2 secant theta हो जाएगा, मेक सेंस। ऊपर वाला L minus L/2 secant theta हो जाएगा, मेक सेंस। V1 will be volume of the rod immersed in the in the bottom liquid into density into G, तो हो जाएगा L/2 secant theta times A times 6 rho into G। ऊपर वाले पार्ट का L minus L/2 secant theta into A into 2 rho into G, correct। OP1 is L/4 secant theta, OP2 is because it is midpoint of S and the end point, P2 जो है वो सरफेस वाला पॉइंट और जो लास्ट वाला एंड पॉइंट है उन दोनों का मिड पॉइंट है, तो उसका डिस्टेंस फ्रॉम P2 विल बी हाफ ऑफ द मीन ऑफ दोस टू डिस्टेंसेस, L/2 sin secant थीटा और टोटल जो है वो तो L है, ये जो डिस्टेंस है along the rod वो L है, so we get this 2 plus secant theta into L plus L/4, ओके। तो ये थोड़ा सा चेक इसको ऐसे कर सकते हैं कई बार कि जैसे अगर थीटा 0 डाल दिया तो 3L/4 आना चाहिए, थीटा 0 डाल दिया तो 3L/4 आ रहा है, तो थोड़ा सा चेक हो जाता है, which is a very good practice। तो B1 into 3, उसमें 3 आ रहा है, तो 1/4 आ रहा है, तो 1/4 और secant स्क्वायर है और sin थीटा, ओके। B2 में 2 को कॉमन ले लिया, एलसीएम ले लिया और फिर कैंसिल कर दिया 2 रो से, तो 2 तो 2 माइनस secant थीटा हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस secant थीटा, तो 4 माइनस secant स्क्वायर थीटा बाय 4 भी रहेगा, बाय 4 भी रहेगा, into sin थीटा माइनस हाफ रहेगा यहाँ पे। So I think now I have checked and I think this is correct. Um, secant square theta, so 3/4 plus 1 minus half, 3/4 plus half,
तो 5/4 तो हमने सेकंड थीटा को 1 डाल दिया। क्या ये करना ठीक है? ये करना ठीक है, बिकॉज जब हम थीटा को बहुत छोटा लेते हैं तो हम लीनियर अप्रोक्सीमेशन ही लेते हैं, फर्स्ट टर्म लेते हैं, एंड सेकंड थीटा इन द लीनियर अप्रोक्सीमेशन इज 1, जस्ट लाइक cos थीटा। यस, थीटा स्क्वायर वाले टर्म्स लेने का कोई पॉइंट ही नहीं है, वो तो जीरो, वो तो हमने बाद में निगलेक्ट ही करने वाले हैं। सो सेकंड थीटा has to be, तो टाइम पीरियड पूछा है। सो दिस इज द टॉर्क, the moment of inertia is 1/3 मास कितना है, रो into LA into L square, so 1/3 ml square. So this is the moment of inertia, and जो टाइम पीरियड होता है वो कैसे निकालते हैं कि टाइम पीरियड is 2 pi under root I by c, where c is the coefficient in the torque theta equation. uh, right, so torque is equal to c theta, मतलब sin theta is theta of course, so it comes 2 by 4 by 15, तो 4L by 15G, ये आएगा, दिस इज द आंसर। तो हमसे पूछा है n, तो √15 हमें निकालना पड़ेगा, बिकॉज 2 pi by n है, unless I made some calculation error जो मैंने की है, I don't think I made any calculation error. Second theta is 1, second theta has to be taken to be 1 because we have to neglect the higher order terms, doesn't make any sense to keep them. Moment of inertia is 1/3, correct, and there are 2 buoyant forces acting, एंड buoyant force का जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है वो निकालना था, और buoyant force की वैल्यू निकालनी थी, उसमें दोनों चीजों में जो ज्योमेट्री थी वो बहुत इंपॉर्टेंट थी, वो हमने केयरफुली कर ली, तो दोनों पॉइंट फोर्सेज आ गए, दोनों के पॉइंट्स ऑफ एप्लीकेशन आ गए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया, तो it is 2 pi under root I by C, I by C, which is 1/3 divided by 5/4, 4L by 15, so it is, so this implies n जो हमने निकाले हैं वो √15/2 होगा, so डेसिमल प्लेसेस से निकालने हैं तो वो 15 का निकाल लेते हैं, so 65 नहीं 68 68 into 8 कितना हो जाएगा, 4 into 6 5/4 56 हो जाएगा, 8 ऐसा 5600 हो जाएगा, 76 है, 76 में कितना मल्टीप्लाई करेंगे, ये वाला तो सिंपल लग रहा है, 7 तो 9 into 4 6 4 53 5369 5369 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 767 करेक्ट है, तो ये आएगा 1, so now 387 का डबल कितना होगा, 767 74,
और ये दो जीरो रहेंगे, so 23,000, तो इसमें we'll get 3, तो 3 आएगा, 3.873 के आसपास आ रहा है, so n is equal to 1.936 approximately, so 1.94, this is the answer. So let's move on. Very beautiful question. Calculation थोड़ा सा important था. अगला क्वेश्चन है कार्नोट इंजन के ऊपर. So you can read the question. तो 5 आइडेंटिकल कार्नोट इंजन हैं. आइडेंटिकल है कि नहीं वो इम्पोर्टेंट नहीं है, बट देयर एफिशिएंसी इज ईटा. आइडेंटिकल तो नहीं होंगे क्योंकि स्टेप वाइज ऑपरेट कर रहे हैं. तो पहले वाले कार्नोट इंजन को हमने कुछ हीट दी, मतलब किसी रेट से हीट दे रहे हैं कॉन्स्टेंटली, वो द कार्नोट इंजन्स आर गोइंग थ्रू द साइक्लिक प्रोसेसेस वन बाय वन. तो uh, हमने उस तरह से अरेंज किया हुआ है कि जब पहला वाला कार्नोट इंजन हीट रिजेक्ट कर रहा है तो दूसरा वाला उस समय इज गोइंग थ्रू द प्रोसेस जो आइसोथर्मल ऊपर वाली प्रोसेस होती है, इन विच द कार्नोट इंजन एब्जॉर्ब्स हीट. तो वो उस समय एब्जॉर्ब कर रहा है, फिर जब दूसरा वाला रिजेक्ट कर रहा है तो तीसरा वाला एब्जॉर्ब कर रहा है, एंड सो ऑन. एंड दे आर गोइंग थ्रू द सेम नंबर ऑफ साइकिल्स पर यूनिट टाइम. मतलब टाइम में वो सारी साइकिल्स अलाइंड है, सेम नंबर ऑफ साइकिल्स पर यूनिट टाइम. ओके, राइट, कि मतलब हम पर साइकिल जो चीजों को करेंगे और पर यूनिट टाइम जो चीजों को करेंगे उनमें डिफरेंस नहीं होगा अगर ऐसा है तो पहले वाले कार्नोट इंजन को हमने क्यू नॉट per cycle is the heat given to the first Carnot cycle. First Carnot engine is Q naught per cycle, and W is the amount of total work done by all the engines. तो जो नेट एफिशिएंसी है वो ये है, राइट. तो लिखना शुरू करते हैं. तो कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी कैसे डिफाइन करते हैं? जो वर्क आउटपुट है which is और मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, तो ये पांचों चीजें इक्वल होंगी कि सबकी एफिशिएंसी बराबर है. करेक्ट, और वन कैंसिल हो जाएगा सब में, तो हम सारी हीट्स को आपस में रिलेट कर सकते हैं. एंड दैट मेक्स सेंस, राइट. क्योंकि हमें वर्क लिखने के लिए जस्ट हैव टू रिलेट द फर्स्ट हीट एंड द फाइनल हीट, क्योंकि बाकी सब कैंसिल हो जाएंगे. वर्क क्या होगा? वर्क होगा
आप उल्टा सकते. So obviously these are all magnitudes. They're all positive. All these numbers are positive. Work is positive. Q, all the Qs are positive because we are dealing with magnitudes. Uh, तो सारे कैंसिल हो जाएंगे. ठीक है. और फर्स्ट वाली इक्वेशन से हमें क्या मिल रहा है? so similarly, power में कुछ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सबको. राइट. अब हमें बेसिकली Q5 और Q0 का एक डायरेक्ट रिलेशनशिप चाहिए. So let me write all the relations down. So very interesting. How do we solve this? Uh, so I'm stuck over here. तो वर्क मैंने लिख दिया Q0 minus Q5 और मैं डायरेक्ट लिखना चाहता हूँ Q0 तो 1 minus Q5 by Q0. But how do I get to that point? I only have this information. सबका डेटा सेम है और ये जो वैल्यूज हैं ये किसी एक गिवन टाइम इंटरवल है. लेट्स से कोई लंबा सा टाइम इंटरवल है 1 घंटा. तो 1 घंटे में जो भी टोटल हीट एब्जॉर्ब हुई कितनी भी नंबर ऑफ साइकिल्स हुई बिकॉज सबकी नंबर ऑफ साइकिल्स पर यूनिट टाइम सेम है. तो ये ऑब्वियसली जो नंबर्स होते हैं दे आर पर साइकिल नंबर्स. तो राइट. तो मतलब पर साइकिल वाले नंबर्स को हम रिलेट इसलिए कर पा रहे हैं बिकॉज द नंबर ऑफ साइकिल्स पर यूनिट टाइम इज द सेम फॉर ईच. अगर ऐसा होता है कि पहला इंजन जितनी देर में एक साइकिल कर रहा है दूसरा वाला 2 साइकिल कर ले रहा है तो जो पहले वाले ने दूसरे वाले में हीट दी Q1 उसका आधा ही सेकंड वाले के लिए हीट पर साइकिल होता. तो कैलकुलेशन में Q1/2 की तरह लिखना पड़ता बट वो नहीं करना पड़ रहा है. सो हाउ डू वी सॉल्व दिस? सो मेरे पास यहाँ पे थर्ड इक्वेशन में Q2 है और फर्स्ट इक्वेशन में Q2 है. तो मैं सबको मल्टीप्लाई कर देता हूँ. Q2 will get cancelled. तो मैं चारों को मल्टीप्लाई कर देता हूँ. I think that seems like the most reasonable thing to do. चारों को मल्टीप्लाई कर दो. बट Q3 तो Q2 कैंसिल हो जाएगा दिख रहा है मेरे को. क्या Q3 कैंसिल हो जाएगा? Q3 भी कैंसिल हो जाएगा. Q4 कैंसिल नहीं होगा. Okay, so let me just multiply all. इसमें ऐसा लग रहा है कि 2 बार कुछ करना पड़ेगा. पहले मल्टीप्लाई करके एक स्टेप आएगा, इंटरमीडिएट स्टेप आएगा. So
Q1 राइट हैंड साइड पे एक बचेगा, Q2 भी राइट हैंड साइड, Q2 कैंसिल हो जाएगा, Q3 कैंसिल हो जाएगा, Q4 भी राइट हैंड साइड पे एक बचेगा. So I'll get this. Uh, okay. Mhm. Okay. Then how do I get Q5 in terms of Q naught? Interesting problem. Q1 भी आएगा आई थिंक. So Q1 आएगा, सॉरी Q3 तो नहीं आएगा यहाँ पे. uh, Q1 आएगा. Q2 और Q3 जो बीच वाले दोनों हैं वो बाहर हो गए क्योंकि उनका परफेक्ट कैंसलेशन हुआ है. Q2 का कैंसलेशन हुआ है मल्टीप्लाई करने से, Q3 का भी हो रहा है, बट बाकी बाहर वालों का नहीं हो रहा. ओके, देन व्हाट वी डू इज आप क्या करेंगे. आई थिंक आई हैव सीन द सॉल्यूशन नाउ कि जो ये वाली इक्वेशन है, सेकंड वाली और फोर्थ वाली, इन इन दोनों को डिवाइड कर देंगे. तो इफ यू ऑब्जर्व तो इसमें Q1 Q2 Q1 Q4, लेकिन Q2 भी आ रहा है उसमें. ओके, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम. I don't want to pause the video over here. I want to give you the authentic experience of me solving this. That is more fun, more authentic, feels more real to me. मैं ऐसा भी कर सकता हूँ कि पॉज करके सोच लूँ, बट आई वांट टू टेक द रियल अमाउंट ऑफ टाइम दैट इट टेक्स मी टू सॉल्व. ऑफ कोर्स एग्जाम में तो आगे बढ़ना था यहाँ से, मतलब अगर इतना नहीं हो रहा है तो जस्ट हैव टू लीव एंड मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ऑब्वियसली डिवाइड भी करना है कुछ ना कुछ करके. हमें Q1 Q4 को यहाँ से हटाना है. uh, तो सबको मल्टीप्लाई करके तो Q2 कैंसिल हो जाएगा, Q3 कैंसिल हो जाएगा. इट मेक सेंस. Q4 remains on the right hand side and Q1 also remains on the right hand side, and then Q5 and Q0 come over to the left hand side. ठीक बात है. तो ये हो जाएगा, मतलब इसमें कुछ मिस्टीरियस चीज नहीं है. इट्स जस्ट द राइट काइंड ऑफ मैनिपुलेशन. बस कुछ इसमें कुछ आंसर 211 over 243, which looks very strange, right? It might take a lot of solving. 243 is fifth power of 3. तो 3 का कुछ यहाँ पे रोल होने वाला है. और ऊपर 32 आ रहा है. 32/3, 2 मतलब 243 माइनस 32 आ रहा है ऊपर. अच्छा,
की वैल्यू में गिवन है, all of these are equal to eta. Oh, I'm really sorry. So all of them are also equal to eta. Wow, 1 minus eta. Hmm. So they are all equal to 1 minus eta. So I missed that. तो हमें करना ये है कि you have to find Q5 in terms of Q naught and uh, find Q5 in terms of Q naught and eta and put it in the formula for the net efficiency and then solve for it, right? So ये 1 minus eta है। तो फिर तो हो जाएगा। That's very easy. That's very easy. फिर तो ये नहीं करना था। It's नहीं करना था। I actually missed what I had to do for solving this. कि क्या निकालना है वो थोड़ा सा मिस कर दिया मैंने। तो ये सारे 1 minus eta के बराबर है, तो सबको मल्टीप्लाई कर दो। So Q5 by Q naught, तो फिर तो इजी हो गया कि मैंने सबको मल्टीप्लाई कर दिया, तो सक्सेसिव कैंसिलेशंस हो गए और सिर्फ Q5 by Q naught बचा। तो eta net is W net, which is Q1 minus Q5 over Q naught. So I just missed something there. This is how we solve. So 211 by 243, 1 minus that is 32 by 243. So about 1 by 5 is 2 by 3. Is 1 by 3. So moving on. So thermodynamics का क्वेश्चन है। So thermally conducting but immovable, तो लेफ्ट हाफ में, लेफ्ट वाले पार्ट में S1 में आइसोकोरिक प्रोसेस होगी और राइट वाले में आइसोबारिक होगी। और हमें टेम्परेचर डिफरेंस गिवन है। सो लेफ्ट वाले कंपार्टमेंट में क्या प्रोसेस हो रही है?
because there is a temperature difference, and finally the temperature difference has decreased. So there, ऐसा मान सकते हैं कि S1 is at a higher temperature, then heat starts flowing from S1 towards S2. तो हाफ में लेफ्ट वाले पार्ट में आइसोकोरिक कूलिंग हो रही है. तो लिख लेते हैं, राइट. और टेम्परेचर डिफरेंस विल ऑब्वियसली वेरी, और उस वेरिएशन के साथ जो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर है वो भी चेंज हो जाएगा. तो वी हैव टू राइट द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ हीट ट्रांसफर between the two partitions, between the two sections. Um, right. तो instantaneous rate of heat transfer. दोनों में एक एक मोल गैस है, और राइट वाले में प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, और वॉल्यूम्स के बारे में हमें कुछ नहीं गिवन है. ओके. ऑब्वियसली प्रेशर्स के बारे में भी हमें नहीं गिवन है. So we are not given any information about what the pressures initially are, what the temperature is, and what the volume is. बस ये पता है कि राइट वाले में प्रेशर एटमॉस्फेरिक ही रहेगा. तो उसका जो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ, उसका जो इंस्टेंटेनियस टेम्परेचर है, और जो लेफ्ट वाले का इंस्टेंटेनियस टेम्परेचर है, उन दोनों को हमें लिखना पड़ेगा, क्योंकि और उनके नाम से हम हीट ट्रांसफर का रेट लिख सकते हैं. और हीट ट्रांसफर का रेट लिख लिया तो उसको इक्वेट करेंगे with the difference in, like, that rate of heat transfer will actually be equal to dq by dt on the left hand side and dq by dt on the right hand side. That makes sense. uh, what a good question, what a nice question. So let me try to concentrate.
So I've solved it. एक बार check कर लेता हूँ. Conceptually, though, I think it's not very difficult, but solving is very interesting. So I think it is correct. My solution is correct. And the sixth step, more important, key, how to get a differential equation in terms of the temperature difference. ये तीनों चीजें बराबर होंगी कि पहले वाले का रेट ऑफ चेंज, पहले वाले का रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, दूसरे वाले का रेट ऑफ रिजेक्शन ऑफ हीट, और हम T1 T2 में से किसी को भी बड़ा मान सकते हैं. मान सकते हैं लेफ्ट से राइट हीट जा रही है, राइट से लेफ्ट जा रही है, डजंट मैटर. तो हमने मान लिया कि लेफ्ट राइट से लेफ्ट जा रही है, तो लेफ्ट पार्ट में आइसोकोरिक हीटिंग हो रही है. इसको मैं सही कर देता हूँ. So this is going to be the way the processes are moving. It doesn't matter कि किस में कूलिंग हो रही है, किस में हीटिंग हो रही है. The fact remains the same. The answer remains the same. तो differential equation in terms of the delta T लेके आना है, also solve करना है. It's a very beautiful question. I think so far the questions are सबसे beautiful question. Thermodynamics is one of my very favorite chapters. तो वैसे ही मुझे अच्छा लगता है. और ये क्वेश्चन बहुत ब्यूटीफुल है. It's very, I don't think it's a very difficult question, but it's very beautiful. So let's move on. कुछ मैग्नेटिक फील्ड का क्वेश्चन है. पूरे पेपर मास्टरपीस पेपर लग रहा है. मतलब हर क्वेश्चन एक अलग ही क्वेश्चन लग रहा है. और अभी तक कोई गलती भी नहीं नजर आई, कोई क्वेश्चन गलत नहीं लग रहा मेरे को. तो हमें मैग्नेटिक फील्ड z एक्सिस पे निकालना है, एक बहुत दूर वाले पॉइंट पे. तो we can just find the we just need to find the magnetic moment. तो magnetic moment निकालने के लिए what I do is
रिंग एलिमेंट्स, मैग्नेटिक मोमेंट निकाल लिया तो उसके बाद फिर मैग्नेटिक डाइपोल के फॉर्मूले से हो जाए, उसके मैग्नेटिक डाइपोल के मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला लगा के आंसर आ जाएगा। So charge on this strip is um, q upon um, pi r l होता है सरफेस एरिया। तो मैं स्मॉल एच की जगह कैपिटल एच सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, बिकॉज आई वांट लिमिट वाली हाइट को एच लेना चाहता हूँ। ओके, टोटल सरफेस एरिया विल बी pi r l, 1.53। तो what are some formulas? तो ये बस देख रहे हैं कितना टफ क्वेश्चन है, मतलब कोन की सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या भूल सकते हैं, अपने इतना कुछ पढ़ा है, बाई चांस भूल गए तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, गलत कर देंगे। बट ऑब्वियसली इंट्यूटिव भी है कि पाई आर एल कैसे आता है, राइट। दिस इज सरफेस एरिया, राइट। राइट, सो पाई आर एल लिख लिया मैंने, इस टोटल सरफेस एरिया, तो दिस इज चार्ज पर यूनिट एरिया multiplied by the area of the ring element, which is this inclined height, inclined height, so इसको थीटा ले लेता हूँ, so into, तो इसमें इंटीग्रेशन बहुत मेहनत करवा रहे हैं आपसे, तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे फिजिक्स के इसमें आपसे मेहनत करवा रहे हैं। सो बहुत टफ, मतलब बहुत टफ तो नहीं बोलूंगा, लेकिन काफी टफ पेपर है, काफी लंबा पेपर है, एज यूजुअल जैसा फिजिक्स में आजकल आता है। जेईई एडवांस का, मेंस का तो बहुत इजी आता है, जेईई एडवांस का पेपर ऐसे ही आता है आजकल। So 2 pi r into the inclined height, which is dh by cos theta. So dq, so h के टर्म्स में कर सकते हैं इंटीग्रेट, या r के टर्म्स में कर सकते हैं, मैं h के टर्म्स में कर लेता हूँ। So r is, and cos theta is cos theta को मैं ऐसे लिख लेता हूँ ताकि मेरा वो वाला कैंसिल हो जाए, तो cos theta will be this, so dq will become qr upon r h
into DH और R की जगह मैंने लिख दिया कैपिटल R कैंसिल्स, स्मॉल r की जगह कैपिटल R इंटू स्मॉल h बाय कैपिटल H, सो ये आ रहा है dq। तो इसको चेक कर सकते हैं कि अगर पूरे चार्ज को इंटीग्रेट कर दें, मैं इसमें दोनों तरफ इंटीग्रेट लगा दूं तो टोटल चार्ज कैपिटल क्यों आना चाहिए, जो क्या है। दैट्स अ गुड वे टू चेक। गलती को थोड़ा सा चेक करते हुए जरूर चलना चाहिए। एग्जाम में कई बार इतना टाइम तो नहीं होता है कि आप पूरा दोबारा चेक करें, आइडियली आपके पास होना चाहिए, मतलब यू शुड सॉल्व इन अ पर्टिकुलर वे, मतलब यू शुड हैव सो मच गुड प्रैक्टिस कि आप सारा कैलकुलेशन चेक भी कर पा रहे हैं। बट अगर नहीं कर पा रहे हैं तो यू शुड हैव दीस स्मॉल चेक्स इन माइंड। तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा, ओमेगा डी क्यू, ओमेगा बाय 2 पाई डी क्यू, कि मतलब टाइम पीरियड से डिवाइड कर देते हैं टोटल चार्ज को, कि अगर एक रिंग है वो रोटेट कर रही है, टाइम पीरियड से डिवाइड कर दिया टोटल चार्ज को, तो वी गेट द करंट इनटू द एरिया व्हिच इज पाई आर स्क्वायर। so कितना आएगा, ओमेगा बाय 2 इनटू आर स्क्वायर। so dm becomes uh, so 2 cancels, सो अगेन इसमें डायमेंशंस को आप चेक कर सकते हैं कि करंट क्यू भी आएगा बस। so total magnetic moment, this is magnetic moment। so कोन का हमने मैग्नेटिक मोमेंट निकाल लिया, चार्ज कोन है वो रोटेट कर रहे, तो इट्स लाइक अ मैग्नेटिक डाइपोल इफ यू गो टू अ पॉइंट ऑन द एक्सिस। तो अब ये जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है उसी एक्सिस पे अगर हम चले जाते हैं तो वो डाइपोल की एक्सिस भी वही होगी। अगर हम इसी इस प्लेन में किसी डिस्टेंस पे चले जाते तो वो बाइसेक्टर, वो इक्वेटर होता, जो इक्वेटोरियल प्लेन होता है डाइपोल का। तो हमें इक्वेटर वाला फॉर्मूला लगाना पड़ता है, बट यहाँ पे हमें डाइपोल का मैग्नेटिक फील्ड का तो बहुत दूर चले गए, तो कोण छोटा सा है, तो ओमेगा बहुत दूर चले गए यहाँ पे, तो मैग्नेटिक फील्ड विल बी इन दिस डायरेक्शन। तो यहाँ मैग्नेटिक मूवमेंट का डायरेक्शन ये है, तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन विल बी in the same direction as the magnetic moment। तो B will be जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक डाइपोल के केस में फॉर्मूला होता है 2kp by r cube, ऐसे इसी इस केस में भी 2km by r cube, and k is mu naught by 4 pi। तो ये है 1 by 2 pi 1 by 8 pi हो जाएगा। आंसर इज 1 by 8, आंसर इज 1 by 8, not by 4 pi है, ठीक है। so 1 by 2 हो जाएगा।
So this is the answer. This is the answer. It is equal to. So not very difficult, but again आपकी कैलकुलेशन और आपकी सॉल्विंग अगर फास्ट नहीं है तो फिर प्रॉब्लम होगी। तो वही आपकी एफिशिएंट सॉल्विंग भी चेक करते हैं। अब इस मैच में आगे 4 क्वेश्चन हैं इस मैच के। आई थिंक यही 4 क्वेश्चन होंगे बस। मैं आगे नहीं देख रहा हूँ कि पेपर में क्या क्या है। मैं देख सकता हूँ क्योंकि मतलब देखना अलाउड है, मतलब आई एम सॉल्विंग द पेपर, बट इस मैच फुली थोड़ी सी। तो लेट्स सी। अभी तक पेपर वाज डिसेंटली, मतलब नए आइडियाज के टर्म्स में डिसेंटली डिफिकल्ट। नए आइडियाज के टर्म्स में आई वुड से 7 to 8 on 10 था, और सॉल्विंग के केस में डेफिनेटली 9 on 10। तो लिस्ट वन शोज, पढ़ लेता हूँ। डोंट हैव द एनर्जी राइट नाउ टू स्पीक टू मच because solving these new questions. तो इंटरफेरेंस का क्वेश्चन है, the length traveled by the wave, path difference का क्वेश्चन है। सॉल्व करना शुरू करते हैं। सो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए लैम्डा का मल्टीपल होना चाहिए, लैम्डा का इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए पाथ डिफरेंस, राइट। तो पहले वाले केस में पाई आएगा। सो मैच करना है हमें, तो हमें अप्रोक्सीमेट आंसर चाहिए बस। तो पी के केस में रेडियस इज गिवन टू बी 0.5 mm, तो पाई इंटू आर माइनस। और ऑब्वियसली अगर मैं n की वैल्यू को बढ़ा लेता हूँ तो l को भी बड़ा होना पड़ेगा, तो लीस्ट वैल्यू ऑफ l के लिए मैं n को 1 लूंगा, n को 1 लूंगा। तो पाई/2, सो पाई/2 कितना होता है 1.57, 0.57। सो इट इज ये वाला है, क्योंकि लैम्डा हमें गिवन है 0.29। क्यू के केस में
uh, 0.5L, 2L over 2L minus L is lambda. L is equal to lambda. So easy question है. So mismatch तो easy होता है. बस आइडिया नया है तो डार्ट हो जाती है कई बार. तीसरे वाले केस में वेरी इंटरेस्टिंग. तो ये जो डायरेक्ट पाथ है एस से डी और ये वाला तो कैंसिल ही हो जाएगा पाथ डिफरेंस. तो जो बस सर्कल वाला पार्ट है उसको ले लेंगे एंड उसका रेडियस होगा L by root 2 is the radius. So pi into L by root 2. So 1.4 over 3.14. 1.4 into 0.29. 0.29 is basically 2 by 7. So 2 by 7 into 1.4 is 0.4. 0.4 over pi. तो बहुत छोटी वैल्यू आएगी 0.13. तो इतना तो मिसमैच में सॉल्व ही नहीं करना पड़ता. मतलब हम तो निकाल रहे हैं बट सॉल्व नहीं करना पड़ता यूजुअली. तो P का 3 है और Q का 4 है और R का 5 है. तो डी ऑप्शन करेक्ट है. इसका होना चाहिए. और एस में 105 डिग्री दे दिया जस्ट फॉर फन. सॉल्व करना भी नहीं पड़ेगा हमें. तो मैं ओरली करने की कोशिश कर रहा हूँ. वैसे तो कर ही लेंगे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि दिस इज 45 एंड दैट इज 105. तो ये वाला 30 डिग्री होगा. तो एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे. छोड़ देते हैं. I don't think we need to solve this. We should move on to better questions. There is absolutely no need, but निकाल सकते हैं. 1.19 आएगा to option 2 आएगा. So just drop a perpendicular and that angle is 30 degrees. If this is 90, so it is 60 and this is 45. तो ये L by root 2 होगा और वो वाला नहीं L by root 2 नहीं because I've dropped a perpendicular. तो एरिया नहीं एरिया नहीं because I dropped a perpendicular over here. So this becomes 45 and this becomes 60. Right. तो ये वाली जो चीज है this ये वाली जो ये जो साइड है this gets divided in the ratio of cot 45 is to cot 60 है ना. cot 45 is to cot 60. cot 45 is 1, cot 60 is 1 by root 3. So it is 1 is 1 by root 3 के रेशियो में डिवीजन हो रहा है. और यहाँ पे अगर ये 1 है तो लिख लेते हैं. तो दिस इज 1 over 1 plus 1 by root 3. So root 3 over root 3 plus 1. This is root 3 over root 3 plus 1 into L. And this is L over root 3 plus 1. तो यहाँ से आ जाएगा. तो no need to solve this. Solve ही नहीं कर रहा हूँ. I don't need to.
तो लिस्ट तो इजी होना चाहिए। तो ये तो थियोरेटिकली इसको देखते हैं, मॉडर्न फिजिक्स का लग रहा है। तो ऐसे थियोरेटिकल क्वेश्चन भी आते हैं। थियोरेटिकल क्या मतलब करने वाले questions होते हैं? Partially polarized sunlight, uh, colorful sky in North Polar region, dark and bright fringes is diffraction. Rainbow is, uh, I think rainbow is total internal reflection. So R का 2 होना चाहिए और डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस का डिफ्रैक्शन होना चाहिए, तो ऑप्शन सी होना चाहिए। P का 4, colorful sky, scattering of light, okay, and Q का 1, which is partially polarized sunlight, is due to dispersion. Dispersion, uh, dispersion क्या होता है? Dispersion होता है uh, Q का 1 हो सकता है, Q का 1 है, R का 1 हो सकता है क्या? So very confusing. I don't know this. Uh, S का definitely 3 होगा, तो मुझे A और B ऑप्शन में लग रहा है because I think R का 1 होना चाहिए. Rainbow is dispersion and reflection, because rainbow is like splitting of light into colors, right? And in that case P का क्या होगा और Q का क्या होगा? तो Q is partially polarized sunlight, I think is total internal reflection. Scattering of light by molecules in the atmosphere. It's quite a confusing questions. So I think I'll leave it for now. तो ये क्वेश्चन तो आप खुद भी कर सकते हैं, because like you don't know theoretical origins of these things better than me. There is no solving involved. तो ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा लग रहा है इंडक्शन का, EMI का। So I can read the question. Loops are rotating over the z-axis, passing through the point over time period t in clockwise direction. चारों में अलग अलग लूप्स हैं. Region x greater than 0 contains uniform magnetic field and plus z. Induced current का qualitative variation पूछा है, मतलब साइन का कुछ प्रॉब्लम हो सकता है. मतलब साइन is you should not worry about the sign of the current, मतलब and the magnitude of the current. In fact उल्टा बोल रहा हूँ, sign is important because sign can be clearly determined, but because the dimensions of the loop and resistance etc are not given, so it doesn't matter. Like the magnitude of the current cannot be found. It doesn't matter.
तो पहले वाले केस में क्या होगा कि टाइम पीरियड सबका टी है, तो t/2 तक लूप एंटर करता रहेगा। इसको ओरली सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो t/2 तक लूप एंटर करता रहेगा, और द rate of in rate of change of area inside the magnetic field भी constant होगा. We can find that EMF by just uh, looking at the magnetic force on the charges on the edge, on the front edge, जो कि अंदर मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहे हैं। तो इसको इमोशनली, ये बेसिकली इमोशनल ईएमएफ का सिचुएशन है। जो फ्रंट एज है, जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रोटेट कर रहा होगा, रॉड ऑफ रेडियस आर, ऑफ लेंथ आर, उसमें हाफ बी ओमेगा आर स्क्वायर ईएमएफ इंड्यूस होगा, कांस्टेंट ईएमएफ इंड्यूस होगा, और t/2 तक वही होगा। और फिर जब बाहर आ जाएगा लूप, मतलब आधा रोटेट करने के बाद, द डायरेक्शन ऑफ द करंट विल रिवर्स बिकॉज द एरिया ऑफ द लूप इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड विल स्टार्ट डिक्रीजिंग, राइट। तो p का 3 होना चाहिए। तो अब R को देखते हैं। R वाला इजी है, तो R वाले में सेम होगा, मतलब 60 डिग्रीज वाला केस है, तो t/6 तक ऐसा होगा, फिर 0 रहेगा, फिर t/6 टाइम के लिए उल्टी डायरेक्शन में होगा, फिर 0 रहेगा। तो ऑप्शन 1 लग रहा है। और जो सेकंड वाला है उसमें क्या होगा कि 60 डिग्रीज तक पहले होगा, फिर 60 डिग्रीज तक नहीं होगा, फिर 60 डिग्रीज के लिए होगा, तो पूरा लूप अंदर है। राइट, फिर 60 डिग्रीज के लिए और होगा, क्योंकि देन द लूप इज एग्जिटिंग, है ना। तो but the direction will reverse, so it's option 2. So this math is very easy. ये पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, I think I should not read this because it's very easy. तो second वाले का जो है आपका S का, S के केस में 0 होगा, because while one of them is entering, the other is exiting. या 5 भी हो सकता है, तो 3 to 1 वाले 2 ऑप्शन होंगे, नहीं 3 to 1 वाला एक ही ऑप्शन, तो ऐसा केस में the answer is 0. So option C. So this was the easiest question. This was the easiest question. What
कर सकते थे? आई थिंक ये कुछ मोमेंट ऑफ के क्वेश्चन है. So again, this is also very easy. तो JEE advanced में again इस बार वही पैटर्न शायद 2-3 साल से रिपीट हो रहा है कि लिस्ट मैच इज वेरी वेरी इजी. आपको उल्टे ऑर्डर में सॉल्व करना चाहिए शायद. तो आई थिंक दैट इज अ वेरी गुड स्ट्रैटेजी. तो पी ऑप्शन का सबको मोड डिफरेंशियल निकालना है और रॉड्स जो है वो सारी मास एम और लेंथ एल की है. ओके. तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? आई थिंक साइन स्क्वायर थीटा आता है. इफ if axis is like this and this is like L, तो ये 0 है. O is integral of कि मतलब जो डिस्टेंसेस हैं, अगर मैं रॉड के अलावा किसी डिस्टेंस x तक जाता हूँ तो the distance from the axis is always x sin theta. तो sin square theta हो जाता है. तो पहले वाले केस में it will be 1 by 3 plus 1 by 3 into sin square 45 which is half. So again 1 by 3 आ जाएगा प्लॉट फिर के. तो p का 5 होगा. ओके. r का निकालते हैं. तो r के केस में is the same thing but it's twice, like because uh, it's the same structure as part p but it's just twice. So 1 by 3 की जगह 2 by 3 होगा. तो q का 4 होना चाहिए. तो ऑप्शन डी इज करेक्ट. आई थिंक वी आर डन. s का भी कर लेते हैं. तो 1 by 3 plus 1 by 3 into sin square 30. Sin square 30 is 1 by 4. So 1 by 6. So s का 2 होना चाहिए. Okay. So ran into a contradiction here. Oh, sorry. I was looking at P and R initially. तो S का 2 होना चाहिए, P का 5 होना चाहिए. तो option A looks correct. And R का 2 by 3 है. Correct. So option A. So I think the whole paper is done except for this question. इसमें एक बार फिर से सोच लेते हैं. And if I'm not able to think, I can maybe search for it because this is just a fact-based question. There's nothing to solve. Probably you can do it on your own. मैं search करके बताऊंगा. It doesn't make any sense. You should do it on your own. So I think we have come to the end of this paper and we have solved all of the questions. And I will also post the answer key in the comments later. And thanks for watching.